गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है आपकी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें आ पाएंगी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? आपको पता है कि दो तरह की, एक तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, एक तो जो सिर्फ स्टेट लेवल पर ऑपरेट कर रही है, दूसरी होती हैं जो बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। खासकर जैसे आपने देखा है कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, तो वो अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर जो है वो ऑपरेट करती हैं। तो क्योंकि वो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको कोई एक स्टेट का रजिस्ट्रार जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनके मेंबर्स भी और इनका ऑपरेशन भी जो है एक से स्टेट से ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास किया था, जिसमें ये कहा कि जो ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्रार पर इंस्टेड ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार से जो है ये रेगुलेट होती है। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास होता है। तो अब जो है अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनके ऊपर तो बहुत मल्टीपल लेयर्स के जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उनका फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट रजिस्ट्रार्स के पास होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल तक पर भी ऑफिसर जो है वो इनके ऊपर जो है किसी ना किसी तरह से रेगुलेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ को देखें, तो क्योंकि उनका सारा कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास है, तो उनके ऊपर उतना कंट्रोल या उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं। वो बहुत सारी जो आपकी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट स्टेट रजिस्ट्रार को जो है सबमिट करती होती हैं, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो सिर्फ एक किसी स्पेशल कंडीशन में ही सिर्फ इंस्पेक्शन करने जाते हैं। अदरवाइज़ जो है वो एक तरह से फ्री ही रहते हैं, ठीक है? मतलब कि प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इंस्पेक्शन नहीं होती है। और कोई भी ऑफिसर या फिर स्टेट जो है ऑफिस जो है स्टेट लेवल पर सेंट्रल रजिस्ट्रार का नहीं होता है। सिर्फ एक अकेला ऑफिस है दिल्ली में, जिसके बेसिस पर जो है आपके जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो विक्टिम्स हैं, अगर उनके कोई जो है मेंबर्स के साथ कोई गलत हुआ है, तो वो सिर्फ दिल्ली में जाके ही जो है अपनी जो है ग्रीवेंस का रिड्रेसल करवा सकते हैं। और क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे लूप होल्स देखे हैं हमने कि कोई रेगुलेशन उतनी टाइट नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये पॉन्जी स्कीम्स भी ले आती हैं ऐसे लूप होल्स का एडवांटेज लेके, और जिससे कि मेंबर्स को और जो है बेनिफिशरीज़ को जो है वो नुकसान होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम देखते हैं इसमें की हाइलाइट्स क्या हैं। जो बिल, जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, हमारी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इसमें, ठीक है? ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अब इसके अंदर 3 बॉडीज़ बनाई जाएंगी: कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर और कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन। तो इलेक्शन अथॉरिटी ये देखेगी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनमें इलेक्शंस फेयर, फ्रीली और टाइमली मैनर से होंगे, ठीक है? फिर कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन ये देखेगा कि कोई भी अगर मेंबर की ग्रीवेंसेस हैं उसका रिड्रेसल कैसे किया जाए। तीसरा होगा कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है? जो आपके ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, जैसे आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर आरटीआई के का काम करते हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक होंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और अकाउंटेबल हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें विमेन और एससी एसटी मेंबर्स की भी रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। ऐसे डायरेक्टर्स जिनको एक्सपीरियंस है, जब उनको भी लाया जाएगा, ताकि जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अच्छी तरह से प्रोफेशनली मैनेजमेंट हो सके। फिर जो इनको रजिस्ट्रेशन का इनका टाइम पीरियड होता है उसको भी कम कर दिया गया है, ताकि जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जा सके। फिर और भी प्रोविजंस है, जैसे नॉन वोटिंग शेयर्स भी जो है ये इशू कर सकती हैं, ताकि रिक्विजिट कैपिटल ये रेज़ कर सकें। फिर रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फ़ंड भी ला सकती हैं, ठीक है? और आपके ऑडिटिंग मैकेनिज़्म भी इनका इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल घर करने के लिए, आपके ओवरऑल करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये बिल अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लैंडर लॉरिस सेंचुरी। ये आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली कदावुर स्लैंडर लॉरिस सेंचुरी को जो है करूल
करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसको नोटिफाई कर दिया है। ये पहली कंट्री में स्लेंडर लॉरीज के लिए सेंचुरी बनी है। तो ये स्लेंडर लॉरीज कौन होते हैं? आपको पता है कि ये नेटिव होते हैं इंडिया और श्रीलंका में। रेड स्लेंडर लॉरीज श्रीलंका में है और ग्रे स्लेंडर लॉरीज जो है वो श्रीलंका और इंडिया दोनों में है, ठीक है। जनरली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट और स्वैम्प्स में देखने को मिलते हैं। इंडिया में ये ईस्टर्न घाट्स के करूर और दिंडीगुल फॉरेस्ट डिविजन्स में ये लार्जली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लगभग इनकी इस टाइम पर पॉपुलेशन 5000 पहुंच चुकी है। नॉक्टर्नल मैमल्स हैं ये और आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब जनरली ये ट्री पर ही रहते हैं। अगर हम IUCN का स्टेटस देखें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। हमारे फार्मर्स को भी बहुत बेनिफिट करते हैं क्योंकि जो ये आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को पेस्ट जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ही प्रेडेटर होते हैं। सो अब जो है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट कंजर्वेशन करने के लिए और मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स के लिए जो है ये आपकी कदावुर स्लेंडर लॉरी सेंचुरी को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है नोटिफाई किया है। 11,800 हेक्टेयर का ये फॉरेस्ट होगा और ये एक तरह से रिजर्व फॉरेस्ट होगा। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीडियम टू हाई टेम्परेचर का फॉरेस्ट है। 1200 मीटर अबव सी लेवल का ये हिल है जहाँ पर ये फॉरेस्ट लोकेटेड होगा, तो जो कि आपके स्लेंडर लॉरीज की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपके इकोनॉमी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IMF ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको कम करके 7.4% से कम करके 6.8% जो है वो 2022 के लिए कहा है, ठीक है। तो अब ये कम क्यों किया है? क्योंकि जितनी जो सेकेंड क्वार्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो थोड़ी सबड्यू हो गई है बिकॉज एक्सटर्नल डिमांड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके रिसेशन आने के कगार पर है, रादर आ भी गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी जो है वो बची नहीं रह सकती है, उसको भी जो है एक्सपोर्ट्स उसके सफ़र करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ग्रोथ फोरकास्ट 6.1% रखा गया है। स्टिल अगर हम ये देखें बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया जो कि ऑयल प्राइसेस की वजह से जो है ग्रोथ देख रहा है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें जिसको इंडिया को कहा गया है कि इंडिया जो है एक हॉराइजन की तरह दिख रहा है हमें ऐसी डार्क टाइम्स में, IMF के चीफ ने बोला ये। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बेटर है, इन्फ्लेशन भी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो है वो मैनेज्ड है। इंडिया जो है अभी रिसेंटली कंट्रैक्शन से बाहर निकला है, लेकिन फिर भी 4 मेजर चैलेंजेस जो है IMF ने हाईलाइट किए हैं इंडिया के लिए। एक तो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस और फर्टिलाइज़र प्राइसेस, दूसरा ग्लोबल स्लोडाउन। जब ग्लोबल स्लोडाउन होगा तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कैसे करेगा जब बाहर के लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो फिर स्ट्रॉन्ग डॉलर आपको पता है ना कि हम बार बार देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ में हेडलाइंस में कि इतना रुपया हो गया, इतना पहुँच चुका है, कभी नहीं हुआ ये वो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपी के साथ हो रहा है, रुपी तो फिर भी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज क्योंकि डॉलर बहुत ही तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। फिर इवन जो है ये स्लो डाउन इंडिया में भी कैसे देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया में भी जो है डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और इंडियंस जो है वो कंजम्पशन जो है वो सिर्फ अपने बेसिक रिलीफ आइटम्स पर करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है? सर्वे रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, अप्रैल और अक्टूबर में, और ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी दिखाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरपोल, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की रिक्वेस्ट इंटरपोल को द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि हमने रेड कॉर्नर नोटिस मांगा था अगेंस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू जो SFJ के आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो एनीवेज हम देखते हैं कि कौन कौन से तरह के नोटिस जो है इंटरपोल सेंड करता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे यही है रेड नोटिस क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो इसमें हम लोकेशन मांगते हैं और अरेस्ट करने को कहते हैं इंटरपोल को उस वांटेड पर्सन को जो भी कंट्री इंटरपोल को भेजती है, ठीक है। सो ताकि वो हमारी कंट्री में उसको लाया जा सके और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। ऐसे येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस होते हैं, उनके अपने अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इंटरपोल के बारे में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, 1923 में इसको बनाया गया था। लियोन में फ्रांस में आपका ऑफ कोर्स इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ये इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन उन कंट्रीज़ में भी कराती है जिनमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रेजेंट नहीं है, जैसे इजराइल और पाकिस्तान,
ठीक है। जैसे इसराइल और लेबनान, इनमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, बट फिर भी इंटरपोल जो है दोनों में कोऑपरेशन कराने के लिए तैयार है। ठीक है। सो इंटरपोल जो है वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, और हर कंट्री को इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होस्ट करना पड़ता है, जिसके बेसिस पर इंटरपोल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी, हिस्ट्री, या फिर आप इसको अगर हम ब्रॉडर उसमें आर्ट एंड कल्चर में ही डाल रहे हैं हम इस टॉपिक को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, उन्होंने भी 15 फुट स्टैचू जयप्रकाश नारायण जी का उनकी 120th बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो अनवेल किया है। सितब दायरा विलेज जो है आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ जो कि उनका बर्थ प्लेस है। तो इन्होंने कॉलेज को क्विट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली भी गए उसके बाद, जहाँ पर वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की इनविटेशन पर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और आज़ादी के बाद संपूर्ण क्रांति उन्होंने लॉन्च की, टोटल रेवोल्यूशन लॉन्च किया अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब इमरजेंसी लगाई गई थी। 1999 में उनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्लॉथ वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे जो है अक्टूबर 12 को जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया। एक तरह से अवेयरनेस जनरेट की जा रही है इस दिन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्लॉथ बियर्स के लिए। वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया ने जो है इस डे को प्रपोज किया था बनाने के लिए। तो वह स्लॉथ बियर्स कौन होते हैं आपके? एंडेमिक हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और नेपाल और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, लेकिन 90% जो स्पीशीज़ है वो इंडिया में ही पाई जाती है। अगर हम इनका IUCN का रेड लिस्ट का स्टेटस देखें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें सिटीजन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक ट्राई सर्विस फंड होगा जिसके अंदर आपके नेक्स्ट ऑफ किन जो होंगे, जो भी पर्सन जो है जो बैटल कैजुअलिटी में जो है अपनी जान खो देते हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगी जो भी सिटीजन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा बनाया गया है, और ये चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट के अंदर इसको फंड को क्रिएट किया गया है। जो बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जी हैं वो इसके गुडविल एम्बेसडर भी बने हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is multi-state cooperative societies amendment bill 2022. This topic is important for a governance section. So union cabinet has recently given approval to the multi-state cooperative societies amendment bill of 2022, which seeks to enhance transparency and accountability in these cooperative societies. So what are the multi-state cooperative societies? Generally, you know that at the state level these cooperative societies exist, which are registered with the state governments, rather state registrars. But if these societies they have their members and operation in more than one state, then they are considered as multi-state cooperative societies. For example, there are several sugar mills which are located along the districts on the Karnataka-Maharashtra border. So that's why they are known as multi-state cooperative societies, because they are operating in more than one state. So for that, the management of it, for the management of it, Multi-State Cooperative Societies Act was passed in 2002 by the central government, and it mandates that the administrative and financial control of these societies will lie with the central registrar instead of the state governments. So what is the need of the amendment bill then? Of course, you know that state registered societies they are having multiple checks and balances. You know that the financial and administrative control of these state cooperative societies lie with the state registrar, and they exercise this control through district and tehsil level officers. So there is a multiple layer of checks and balances. But in the case of multi-state societies, these societies are regulated by the exclusively by the central registrar, which does not have any infrastructure or
mechanism for day-to-day control over these multi-state cooperative societies. So you know that state cooperative societies, they generally submit multiple reports to the state registrar, but in the case of multi-state cooperative societies, these central registrars can only allow inspection under special conditions. Also, there is no officers or offices of central registrar at the state level. The only office left for the members to seek justice or to seek the redressal of their grievances lie at Delhi only. Okay, so there are several loopholes which are being exploited by these multi-state cooperative societies. They are using these loopholes to launch even Ponzi schemes and taking advantage of these loopholes and duping their customers or even the members. So for that, this bill was necessary. So what are the key highlights of this bill? So this bill is incorporating the provisions of 97th Constitutional Amendment Act, which relates to the effective management of cooperative societies. So under this bill, there will be three bodies which will be established. First will be Cooperative Election Authority, second will be Cooperative Information Officer, and the third will be Cooperative Ombudsman. So this election authority will ensure that elections will be held in these multi-state cooperative societies and in a fair, free and timely manner. Cooperative ombudsman will provide a mechanism for redressal of grievances of their members, and cooperative information officer will enhance transparency by providing timely access to information like your central information commissioner does in the case of RTI. Okay, so these three bodies will make these multi-state cooperative societies more democratic, transparent and accountable. And apart from that, there are several other provisions also, like representation of women and SC/ST members, professional management of these cooperative societies, so that by co-opting directors who are having experience in the field of banking management, cooperative management, etc. Also, the time period for registration of these societies have been reduced so as to enhance ease of doing business. There are certain other provisions also, like these societies have been allowed to raise requisite capital without even issuing non-voting shares to the subscribers. And also, rehabilitation, reconstruction and development fund can be established so that sick multi-state cooperative societies can be revitalized. Also, the audit mechanism would also be improved. So the next topic is slender loris sanctuary, which is important for your environment section. So Tamil Nadu government has recently notified Kadavur slender loris sanctuary in the districts of Karur and Dindigul. So this will be the first time a slender loris sanctuary will be established in the country. So who are these slender lorises? So this is a genus of loris which is native to India and Sri Lanka. The red slender loris is found in Sri Lanka, and the grey slender loris is found in Sri Lanka and India both. So they are generally found in tropical rainforest, scrub forest, semi-deciduous forest and swamps. They are found largely in the eastern Ghats of India, and the Kadavur Reserve Forest has a population of about 5,000 slender lorises. So they are nocturnal mammals. They are arboreal, which means they spend most of their lives on trees. They are considered as endangered species as per the IUCN status, and they are also protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. They are also beneficial for farmers because they are predators of the pests which harms the agricultural crops. So this Kadavur slender loris sanctuary will help in habitat improvement, conservation efforts, and mitigation of threats to these slender lorises. And this is a 11,800 hectares of forest, which will be declared as a reserve forest now. It is important because it will be helpful for the growth of slender loris because it is having medium to high temperature in the hill, and it has an elevation of about 1,200 meters from the sea level.
So the next topic is World Economic Outlook, which this topic is important for our economy section. So IMF has recently released the World Economic Outlook report, and it has slashed India's economic growth forecast to 6.8% for the year 2022. So you know that earlier this report in April had said that 7.4% would be the growth rate for India, but looking at the second quarter results, the IMF has slashed the growth rate for India. So this, apart from India, it is not that just India is suffering. Rather, the entire world is suffering. The growth prospects of entire world is has been subdued. India's GDP growth is still better, and inflation is still better, and it is not as high as in US or UK, which are grappling with more than 10% of inflation rate. So of course, but IMF has also highlighted four major challenges to India. First, of course, is the higher crude oil rates and fertilizer prices, which can spike domestic inflation. Second is the global slowdown, which will hurt our exports because there will be no demand at the global level. Their buying capacity would reduce, so that's why our exports would suffer. Third is the strong dollar. So appreciating dollar, which means that currency markets would have volatility, and this would put pressure on rupees exchange rate. uh, Also, there could be a situation when low demand could exist between most of the Indians, so they would start focusing upon just basic items, and this will harm our economy, as it will reduce the demand in the economy. So, what is World Economic Outlook? So, it is a survey report by the IMF, and it is published twice a year, April and October, and it presents the state of the global economy. Okay, so the next topic is Interpol. This topic is important for your international relations. So Interpol has recently rejected India's request to issue a red corner notice against Gurpatwant Singh Pannu, and this red notice is sent by the Interpol, or sent by the Interpol to, of course, seek the by the member of Interpol to seek location and arrest of wanted persons, who can then be prosecuted and serve a sentence in the target country. So there are certain other notices also, but of course it is not very important for you, but you can give it a glance. So what is Interpol? It is the world's largest international police organization. It was established in 2019 and 23. Remember that it is not a part of UN. Okay, its headquarters is located in Lyon, that is in France, and it also allows international police cooperation even when diplomatic relations are not present between the countries. Like I was giving an example of Israel, Pakistan, Israel, Lebanon, and so on. Also, Interpol's constitution prohibits any interference which is of political, military, religious, or racial character. Each of the member countries of Interpol has to host an Interpol National Central Bureau through which the country communicates with each other. So the next topic is Jai Prakash Narayan. This topic is important for our history section, but we put it in the art and culture topic of ours. So Union Home Minister has recently unveiled a 15-foot statue of Jai Prakash Narayan ji on his 120th birth anniversary on 11th of October at his birthplace, that is a Sitab Daira village in Bihar. So he was born here, and he quit his college to join the non-cooperation movement before going to University of California, Berkeley, where he was influenced by ideas of Karl Marx. He joined the National Congress at the invitation of Jawaharlal Nehru, and he's one of the founding members of Congress. He was one of the founding members of Congress Socialist Party also. He also galvanized support against Indira Gandhi's government for enforcing the emergency rule, and he called for a Sampurn Kranti, that is total revolution. In 1999, he was posthumously awarded the Bharat Ratna also. So the next topic is World Sloth Bear Day. This topic is important for environment section. So the first time World Sloth Bear Day has been celebrated, and it was celebrated on 12th of October. So the aim of this day is to generate awareness about the protection and conservation of sloth bears. This day was mooted by Wildlife SOS India. These sloth bears are endemic to Indian subcontinent, and they also have small population in Nepal and Sri Lanka. But most 90% of the species is located in India. They are classified as vulnerable in the IUCN Red List, and they are found in all parts of the country except, of course, Jammu and Kashmir and Northeast region.
So the next topic is Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund. This topic is important for governance section. So Defense Minister Rajnath Singh ji has launched the website for enabling citizens so that they can contribute to the Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund, so which is a service fund, and it will be and the money collected in this fund would be utilized for granting immediate financial assistance to of ex gratia to the next of kin of and dependents of battle casualties. And this fund has been established by the Department of Ex-Serviceman Welfare, Ministry of Defense, and this has been created under the Charitable Endowments Act of 1890. So Bollywood actor Amitabh Bachchan ji has also agreed to be the goodwill ambassador of this fund. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.